Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the new definition of small companies. What's the meaning of small companies? What's the new definition of small companies? And then comparison of small companies new definition with the old definition of small companies. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CS Ansar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. And also please like the video and share with your friends so that maximum members can take the benefit of this video. So regarding the new definition of small companies, this notification was on 50th September 2022. So we'll discuss about the what was the old definition, what's the meaning, what's the definition. So before that, one disclaimer is there. All these are my personal views and can't be considered the views of ICI, CSMSR, or any other person or any other authority. And please don't take it any legal advice or the legal opinion or the professional advice or the professional opinion. And the purpose of this video is to just spread the knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And my request to all of you, please also go through the relevant section of the Companies Act, relevant rules, and then amendments, notification. So thank you. So regarding the small company, let's first understand what's the definition of small companies. Small companies definition are provided in section 285. 285 of the Companies Act 2013. It's defined. So let's see. पहले एक बार देखते हैं. Then we'll see what was the amendment and what's the latest definition. What's the comparison and what's the benefit of the small companies. So small company, it's defined in section 2 clause 85. It's defined. Small company means a company other than a public company. So remember one thing. Public company, कोई भी public company, it's not a small company. वो एक्सक्लूडेड में उन्होंने नहीं डाला, स्टार्टिंग में लिख दिया स्मॉल कंपनी मींस ए कंपनी अदर देन ए स्मॉल कंपनी. एंड देन पेड अप शेयर कैपिटल of which does not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 crore rupees. And two things are there, paid up capital and turnover, both the conditions should be fulfilled. ये जो definition है, this is in section 2 clause 85 of the Companies Act 2013 में defined है. Turnover of which as profit and loss account for the immediately preceding financial year does not exceed 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 100 से एक्सीड. और हायर कहां तक है आपकी 10 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर आपकी 2 करोड़ एंड मैक्सिमम 100 करोड़. तो दिस इज डिफाइंड इन सेक्शन 285. तो अदर देन प्रोवाइडेड भी है दैट नथिंग इन दिस क्लोज शेल अप्लाई टू ए होल्डिंग कंपनी आर ए सब्सिडी कंपनी. मींस अगर कोई होल्डिंग कंपनी है या सब्सिडी कंपनी है, दैट्स नॉट स्मॉल कंपनी. देन ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 में जो कंपनीज है, that's also not a small companies. Then company or body corporate governed by any special act. स्पेशल एक्ट की जो भी कंपनीज है जो गवर्न हो रही है, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा, दैट्स आल्सो नॉट ए स्मॉल कंपनीज. सो दिस इज इन डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लोज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. देन देयर वाज वन अमेंडमेंट इन रूल 2 1T के अंदर दिस वन इन द कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल 2014, उसमें एक अमेंडमेंट आई इन द न्यू क्लोज 2, उसको ऐड किया इन द रूल 2. इट डिफाइंस फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लोज 1 and subclause 2I of clause 85 of section 2 of the act, paid up capital and turnover of the small company shall not exceed 2 crore and rupees 20 crore respectively. तो जो ये यहाँ पे अमाउंट था
यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वो भी एस में भी प्रिस्क्राइब, तो दिस इज प्रिस्क्राइब अभी तक 15 सितंबर से पहले तक दिस वाज प्रिस्क्राइब 2 करोड़ एंड द 20 करोड़। तो इसको हम एक बार समराइज में भी देखते हैं। तो जो हमारी डेफिनेशन है ऑफ द स्मॉल कंपनीज, जो विद इफेक्ट फ्रॉम जो अमेंडमेंट आई थी इन रूल 2 उसमें 1 टी में, दिस वाज फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। तो 2021 तक, उससे पहले क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीस, मैक्सिमम 50 लाख रुपीस नॉट एक्सीडिंग, एंड टर्नओवर एज पर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू रुपीस 2 करोड़ रुपीस। और 1 अप्रैल 2021 तक ये क्या था, 2 करोड़ एंड टर्नओवर 20 करोड़ रुपीस। दिस वाज up to 15th September 2022, means 1st April 21 to 15 September 14 September 2022 से क्या डेफिनेशन थी, पेड अप शेयर कैपिटल अप टू रुपीज 2 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू रुपीज 20 करोड़ एज पर प्रीसीडिंग ईयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड उसमें सेम थिंग, not qualified as a small company, public company, holding company or a subsidiary company, section 8 company, company or body corporate governed by any special act. Now this notification जो 15 सितंबर को नोटिफिकेशन आई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो सेम थिंग जो पीछे उन्होंने अमेंडमेंट करी थी, सेम थिंग दे सेड इन रूल 2 इन सब रूल 1 फॉर क्लोज टी। जो क्लोज टी जो पीछे हमने ये डिस्कस किया था, जो यहाँ पे चेंज आया था रूल 2 1 टी में, सेम थिंग नाउ दे हैव अमेंडेड, now they have amended into the company specification of definition detail amendment rules 2022 में they said for the purpose of subclause I and subclause 2I of clause 85 of section 2 of the act, paid up capital and turnover of the small company shall not exceed 4 crore and rupees 40 crore rupees respectively। तो यहाँ पे नाउ सी दिस इज द कंपैरिजन। जो पहले डेफिनेशन थी अप टू 14 सितंबर तक जो डेफिनेशन थी 1 अप्रैल 21 से 14 सितंबर 2022 तक, वो डेफिनेशन थी अगर पेड अप कैपिटल इज रुपीज अप टू रुपीज 2 करोड़ रुपीज, turnover up to 20 crore rupees as per the preceding financial year profit and loss। Now this has been changed through the notification as on 15 सितंबर जो अभी हमने डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंगली पेड अप शेयर कैपिटल अप टू रुपीज 40 करोड़ रुपीज एंड turnover as per preceding year profit and loss account rupees up to 40 crore rupees। So these are the and both conditions should be fulfilled। सिर्फ सिंगल कंडीशन नहीं है, पेड अप शेयर कैपिटल एंड, पहले भी यही सेम था अब भी सेम है। So both conditions should be fulfilled। And another thing, public company is not a small company, that's the same thing, holding or subsidiary company is not a small company, section 8 company is not a small company, company or body corporate governed and by any special act, it's also not a small company। Then जो पीछे ये हमने देखा था पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, लेट्स सी पेड अप कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ओनली इक्विटी या प्रेफरेंस, बट पेड अप कैपिटल मींस इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंशियल कैपिटल। देन amount originally paid on forfeited share should be added to the figure of paid up capital की जो forfeit share कर दे उसके में जो amount आपने originally paid किया उसको भी ऐड करेंगे। जो subscription money receivable है that's also part of paid up capital, but share application money is not the part of paid up share capital, so share application money should not be considered as part of the paid up capital। एंड देन टर्नओवर, जो पीछे हमने देखा था टू कंडीशन थी, पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर। टर्नओवर मींस द ग्रोस अमाउंट, टर्नओवर डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लोज 91 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द ग्रोस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द सेल, supply or distribution of goods or on account of services rendered or both by a company during a financial year। This is the definition of turnover। So this is regarding the definition of small companies and some benefit of the small companies जो MCA ने भी किया है और otherwise भी you can check it out कि these are the benefit of the small companies, means the purpose, जो purpose है गवर्नमेंट का is basically to ease of doing business, less compliance, जो इतनी सारी compliance है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो वो कम करने के लिए they have increased this limit टर्नओवर या पेड अप शेयर कैपिटल की जो लिमिट है। सो इसमें जो फर्स्ट बेनिफिट है, दिस इज नो नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन
advantage of preparing and filing of RBI annual return, then mandatory rotation of auditors, जो mandatory rotation है, not required in case of small companies. Then an auditor of small companies not required to report on the adequacy of internal financial controls and its operating effectiveness in the auditor's report. Then होल्डिंग ऑफ ओनली 2 board meetings in a year, जो आपको वहाँ पे ज्यादा है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी या लिस्टेड कंपनीज में. Annual return of the company can be signed off by the company secretary, or where there is no company secretary, then the board of directors of the company. Lesser penalties as small companies go. So these are some benefit for the small companies. So this is the ऑफिशियल गजेट में जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है. तो इट्स ऑन द 15 सितंबर. जो अमाउंट उन्होंने चेंज कर दिया है 2 crore to 4 crore rupees and 20 crore to 40 crore rupees for the purpose of small companies. So this is all regarding the new definition of small companies and then comparison of the small companies. So in case if you have further any doubt, then we can discuss. You can message me or you can WhatsApp or mail me. But my only request to all of you, please send the message with your name and place, and don't send it unofficial time. कल भी 2-3 मैसेज आए रात को 2 बजे 1 बजे. That's not the good thing. आप एक ऑफिशियल टाइम आप अप टू 9-10 एटलीस्ट तब तो मैसेज भेज दीजिए. 12 बजे 1 बजे कौन आपके मैसेजेस के रिप्लाई करेगा. एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर आल्सो प्लीज. इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.